श्रीमद्भागवत गीता चैप्टर 1 वर्स 13। ततः शंखः च भैर्यश्च पौरवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्शंखाश्च भैर्यश्च पौरवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। शब्दार्थ। तत्पश्चात शंखः शंखः च तथा भैर्यः बिगुल च तथा पौरवः आनक नगाड़े तथा ढोल गोमुख तुरही सहसा अचानक एवं वास्तव में अभ्यहन्यन्त ध्वनि निकलती सह वह शब्द ध्वनि तुमुल भारी अभवत मीन्स थी। संस्कृत अनुवाद। तदा सहसा शंख शंखाः ढोलः बगलः तुरही श्रृंगाः च वादयितुम् आरब्धा तेषां संयुक्तः शब्द च अत्यन्तः भयंकरः आसीत्। हिंदी। तत्पश्चात अचानक शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा नरसिंहे बजने लगे और उनकी सम्मिलित ध्वनि अत्यधिक भयानक थी। इंग्लिश ट्रांसलेट। Then conches, kettle drum, tabourage, drum and trumpets suddenly blared forth, and the noise was tumultuous. When roaring like a lion and blowing his conch, Bhishma announced the commencement of battle. All the regions were filled with hope and encouragement. And suddenly, in all sections of the army, conches, trumpets, and other instruments of material music belonging to the different commanders were sounded. The sounding of these instruments at one and the same time produced terrible noise that echoed and re-echoed through the entire region of the sky.